Assalamu alaikum. Welcome back to the kingdom of reptiles on the planet of the reptiles. You can see here the number of different kind of reptiles. Like this one is the most dynamic chameleon, and here is the turtle. Then this one is a dinosaur extinct reptile. The next this is known as the Sphenodon punctatus, and here is a snake and crocodile. So all of these are the wonders of nature. These are the beautiful creature created by Allah Almighty. So let's start from the different classes of class reptilia, और सॉरी डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया. आज हमारा यही टॉपिक होगा. इससे पहले हमने एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव पढ़े, एडाप्टिव रिलेशंस डिस्कस की, उसके अंदर नापसिड, डायप्सिड्स और सेनेप्सिड्स जो टर्म्स थी उनको डिस्कस किया, क्लेरिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ द एमनियोटिक लिनेज जो एक्सप्लेन की, देन क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, एक सर्वे ऑफ रेप्टाइल्स देखा. ये हमारा इससे पहले का टॉपिक था. तो आज से मैं शुरू करता हूँ ऑर्डर टेस्टुडाइन्स. ऑर्डर टेस्टुडाइन्स जो है बेसिकली इसका पुराना नाम ऑर्डर चिलोनिया भी है. ऑर्डर चिलोनिया या ऑर्डर टेस्टुडाइन्स है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टुडाइन्स और चिलोनिया? टेस्टुडाइन्स जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो लैटिन वर्ड है टेस्टुडो, वहां से डिराइव किया गया मीनिंग टॉर्टाइज, एंड ग्रीक में चिलोन से जो है मीन टॉर्टाइज है. सो बोथ ऑफ दीज हैव द सेम the sense of the meaning. So we are going to discuss about the tortoise or turtles group. So biodiversity लगभग 225 species है. बॉडी स्ट्रक्चर में बोनी शेल है. बोनी शेल आपने देखा होगा, केराटिनाइज्ड बीक होती है चूंच जो उसकी, और आर्टिकुलेटिंग रिब्स हैं, और वेरी प्रोमिनेंट जो है वो स्ट्रक्चर बनाती हैं इनके शेल का पार्ट बनाती हैं. सो व्हाट डू यू नो अबाउट द शेल इन केस ऑफ द turtles or tortoises? So when you say the shell in tortoises or turtles, that means the shell is divided into two parts, or you can say that there are two different divisions of the shell. The upper region of the shell is called Carapace, and the lower shell is known as the Plastron. So what do you say about the Carapace? The dorsal portion of the shell is the Carapace, which form from the fusion of vertebrae. That means vertebrae fusion say expanded ribs say, and bones in the dermis of the skin. So vertebrae plus ribs or plus bones in the dermis of skin जो है वो मिलके इसका carapace बनाती हैं. The next one is about the composition of carapace. Composition definitely keratin protein है जो कि बना रही है carapace. जबकि plastron is a ventral portion of the shell is called as a plastron. It formed by the fusion of by the bony fusion of the pectoral, girdle, and dermal bones. And keratin also cover it because keratin is a main protective cover present both in case both on the surface of carapace and plastron. So next one is the shell in terrapin. Terrapin, another kind of American box turtles, and they have the shell is very flexible, consists of hinges, and allow the anterior and posterior edge of the plastron to be raised. That means कि ये raise किया जा सकता है जो अगले वाला और पिछले वाला जो region है प्लेस्ट्रॉन का, उसको रेज कर सकता है, बॉडी को elongate किया जा सकता है. The hinge allow the shell opening to close when the turtle withdraw into the shell. So इस तरह से ये close किया जा सकता है easily. For example, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जो है वो skeleton of a turtle दिखाया गया, प्लस यहाँ पे shell दिखाया गया. So this one is the shell in case of the turtle, or keratinized covered. So you can see here that the different parts of the body present in case of the turtle. Like this one is the skull region, and this is the neck vertebrae, thoracic abdominal vertebrae. Then the last one is the tail vertebrae, or you can say the caudal vertebrae. और भी बहुत सारी बोन्स हैं वो हम स्केलेटन के अंदर डिस्कस करते हैं और वो करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन अभी जो है वो फिलहाल हम नेक इन टर्टल्स देखते हैं. टर्टल्स एंड 8 सर्वाइकल वर्टिब्री. गर्दन के अंदर 8 मोरे, और जैसे कि हमारे जो नेक सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं वो ऑलमोस्ट 7 है. वो 7 सर्वाइकल हैं. जिराफ के अंदर भी 7 है, लेकिन टर्टल्स के अंदर जो है एक ज्यादा है, और ये एस शेप कॉन्फ़िगरेशन देता है. लुक, यू कैन सी है in this case this one gives the S shape configuration which allow the head to draw into the shell. यही वो चीज है जो shell के अंदर head को वापस withdraw कर लेती है. So this is about the neck, or you can say the cervical vertebrae in case of the turtles. This is known as the dorsal view of the carapace, and this is known as the ventral view of the
कैरापेस, यानी ये डॉर्सल व्यू है, डॉर्सली इस तरह से नजर आता है, जबकि वेंट्रली जो है वेंट्रल डिवीजन भी इसकी होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो इमेजेस शो हो रहे हैं ये लोअर पार्ट के, लोअर पार्ट मीन जो कि प्लेस्ट्रॉन है, प्लेस्ट्रॉन के ये इमेजेस हैं, और प्लेस्ट्रॉन के अंदर that is a ventral part of the shell in case of the turtle. So you can see here, this is the dorsal view of plastron and this is the ventral view of the plastron that is covered by the keratin. लाइफ साइकिल जो टर्टल लॉन्ग लाइफ स्पैन रखते हैं, मतलब बहुत ऐसे ज़्यादा होते हैं जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी को पहुंचते हैं तकरीबन 7 से 8 साल में, और तकरीबन 14 या उससे ज़्यादा साल तक जिंदा रहते हैं। गैलापागोस टॉर्टोइज जो है वेरी लार्ज काइंड ऑफ टॉर्टोइजेस हैं, और यही वजह है कि जिस वजह से ये आइलैंड को गैलापागोस दैट मीन जाइंट क्रिएचर कंटेनिंग, और जो है वो आइलैंड था, और ये वहाँ पर प्रेजेंट है, और लगभग कहते हैं कि मोर देन 100 ईयर्स, यानी 100 साल से भी ज़्यादा अरसे के लिए ये जिंदा रहते हैं जो गैलापागोस टॉर्टोइज हैं। डेवलपमेंट ओविपेरस अंडे देते हैं, फीमेल जो है वो हमेशा जो नेस्ट के अंदर अमूमन जो है वो एग्स के वेट करती है नेस्ट के अंदर, और देन उसके बाद जो है वो एग ले करती है और एग की प्रोटेक्शन कर रही होती है लिटिल बिट, लेकिन ज़्यादा प्रोटेक्शन इनमें नहीं देखी जाती। क्लच साइज जो है होता यूँ है कि जब ये फीमेल अंडे दे देती है तो सॉइल के साथ जो है वो अपने एग्स को, जो लगभग 5 से 100 के करीब एग्स होते हैं, उनको कवर कर देती है सैंड से या सॉइल से। सो डेवलपमेंट टेक्स फ्रॉम 4 वीक्स टू 1 ईयर, यानी मतलब वेरी कर सकती है, डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट के बाद वो बच्चे जो है वो अंडों से बाहर निकल आते हैं। पेरेंटल केयर डज नॉट अटेंड, द पेरेंट डज नॉट अटेंड टू द एग्स ड्यूरिंग दिस टाइम, मोस्टली जो है वो कवर करके चले जाते हैं, उसके बाद वो कोई केयर नहीं करते, और देन जो यंग वन है वो इंडिपेंडेंट होते हैं हैचिंग के ऊपर। और टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए गए, क्योंकि टर्टल्स को बहुत सारा थ्रेट है। टर्टल्स के ग्रीन टर्टल खास तौर पे आपने सुना होगा, और उसकी लाइफ को बहुत सारे खतरात हैं, और इनको सेव करना है, इस क्रिएचर को बचाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है उनमें क्यों लॉन्च किए गए, उसकी कुछ रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली रीजन है कि इनका रेट ऑफ ग्रोथ बड़ा स्लो है। जब रेट ऑफ ग्रोथ स्लो है तो जुवेनाइल जो है वो अडल्ट बनने तक जो है वो वुलनरेबल स्टेट में होता है, उसमें आसानी से अटैक किया जा सकता है, उसका मोर्टेलिटी रेट हाई होता है। सेकंड वन है कि टर्टल की हंटिंग और प्रिडेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन है। लोग जो है इसके एग्स उठा के ले जाते हैं, मोस्टली ये जो रिवर्स होते हैं या ओशंस होते हैं, इन जो सीज वगैरह होते हैं उनके करीब जो उनके जो बीचेस होते हैं वहाँ पर जो है वो एग्स ले किए होते हैं, तो वहाँ से एग निकाल के ले जाते हैं, और मतलब उन एग्स को मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स वाई स्लो रेट ऑफ ग्रोथ, हंटिंग एंड प्रिडेशन इज another common factor that creating an alarm for this species. So the next one is the conservation of sea water. सी टर्टल इन इज कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी वजह ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है ओशन फैले हुए हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर जो ओशन फैले हुए हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ पर टर्टल्स की केयर कर सकते हैं, वो ज़रा डिफिकल्ट सा टास्क है, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट वन इज अबाउट द ऑर्डर रिंकोसिफेलिया। व्हाट डू यू नो अबाउट ऑर्डर रिंकोसिफेलिया? रिंको बेसिकली जो है, रिंकोस जो है वो रिंको मीन स्नाउट और सिफेलिक मीन हेड। स्नाउट हेड मतलब एक ऐसा हेड जो है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर स्नाउट प्रेजेंट होती है एक, तो इस वजह से इसको जो है वो स्नाउट हेड कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वन इसकी एक ही सर्वाइविंग स्पीशी है अभी दुनिया में, और वो न्यूजीलैंड में, उसका नाम है स्फीनोडोन पंक्टेटस, या उसको टुआट्रा बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज अ टुआट्रा और स्फीनोडोन पंक्टेटस। सुपरफिशली ये लिजर्ड लाइक है और रेप्टाइल ये, लेकिन इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अनचेंज हैं अभी तक। तकरीबन कहते हैं कि 200 मिलियन ईयर्स अगो जो मुख्तलिफ तरह के रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए थे, उन्हीं में से उन्हीं के क्लोज रिलेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ज़्यादा चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिली। टूथ स्ट्रक्चर वेरी कॉमन, टूथ स्ट्रक्चर जो है, टूथ अटैचमेंट एंड स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश द टुआट्रा फ्रॉम द रेप्टाइल। ये बाकी रेप्टाइल से जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बिकॉज 2 रोज ऑफ टीथ होती हैं। जैसे आपने फिशिस के अंदर जो है वो देखी होगी कि फिशिस के अंदर शार्क्स हैं, उनमें भी 2 रोज ऑफ टीथ है, सेम इनके अंदर भी 2 रोज ऑफ टीथ है, एक अपर जा में, और सिंगल रो ऑफ टीथ है लोअर जा के अंदर। अगर कोई भी दांत टूट जाता है अपर रो में से बाइटिंग के दौरान या शीयरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट के दौरान, क्योंकि इनका पर्पज ये होता है कि डीकैपिटेट करते हैं। जब भी अपने किसी भी प्रे को खाने लगते हैं, किसी बर्ड की को खाने लगते हैं, तो इसकी
सबसे पहले उसके जो है वो हेड को अलग करते हैं। डीकैपिटेट मीन रिमूवल ऑफ द हेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसे डीकैपिटेट करने के दौरान समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि इसके जो दांत है वो लूज कर देता है, और जब दांत लूज कर देता है तो देन जो दो रोज हैं उनमें से एक दूसरे को रिप्लेस कर देती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है formerly more widely distributed in New Zealand, the tuatara fell prey to human influences and domestic animals. It is now present only on remote offshore islands, and it is protected by the New Zealand law. Mode of development, this one is the tuatara, a long tail, a spiny tail sphenodon in present sphenodon punctatus. And mode of development, they are oviparous, eggling reptiles हैं, underground burrows होती हैं जो वहाँ पर जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, या ग्राउंड नेस्टिंग सी बर्ड्स होते हैं, उनकी जो नेस्ट होते हैं वहाँ पर जो है वो कब्जा जमा लेते हैं और वहाँ पर एग ले करते हैं। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अमूमन डान और डस्ट के टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग टाइम जो वो बाहर आते हैं और ज़्यादातर इंसेक्ट्स और स्मॉल वर्टिब्रेट्स को अपनी खुराक बनाते हैं। सो दिस वन इज टोटली अबाउट द ऑर्डर Rhynchocephalia that includes the Sphenodon punctatus, so you can say that Tuatara. The next one is about the order Squamata. Order Squamata basically is divided into three suborders. There are the three suborders belong to this order Squamata, and in this video we will discuss about the first order, that name is the suborder Sauria. There are about the origin of their ancestors, the origin of this group. This group is about totally about the 150 million years ago. But when you see about their biodiversity, like almost 3,300 species of lizard belong to this suborder Sauria. According to the body structure, there are two pair of legs, upper and lower jaws unite anteriorly, and few lizards are legless, but mostly they have the legs. And pectoral girdle and sternum is present in the as a remnant. So this one is about the body structure. Next one is the size. They may be from few centimeter to as large as 3 meter, and habitat vary from the surface substrate or present inside the rocks, inside the logs. Logs हम गीली लकड़ी को बोलते हैं. They are also tree dwellers. According to the mode of development, they are oviparous, and mostly oviparous, but some are ovoviviparous and viviparous characteristics can be observable in this group suborder Sauria. So the first example name is the geckos. When you see about the geckos or wall lizard, ये हाउस फॉल लिजर्ड होती है, घरों की दीवारों के ऊपर अक्सर आपको छिपलियां नजर आती हैं, तो वो जैकोस कहलाती हैं. जैकोस जो है वो कॉमनली फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ ह्यूमन डिवेलिंग इन सेमी ट्रॉपिकल एरियाज, और शॉर्ट होती हैं, स्टाउट बॉडी होती है, और मोस्टली रात के वक्त एक्टिव होती है, नॉक्टर्नल होती है. सो लिजर्ड लाइक बॉडी है, और क्लिकिंग वोकलाइजेशन होती है, क्लिकिंग करती हैं, वोकलाइज करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और ये एक पैटर्न इनमें देखा जाता है. आइज लार्ज आइज हैं, और प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है नैरो स्लिट के अंदर डे टाइम जो है, और डायलेट कर जाता है, वो प्यूपिल जो डायलेट कर जाता है रात के वक्त, जिसकी वजह से इनकी नाइट विजन जो है वो अडॉप्टेबल होती है. Adhesive disc, it can be attached with on the surface of the walls, on the surface of substrate, due to the presence of special kind of disc, digits present on the digits, and these discs are called as adhesive discs that provide the site for the attachment, that involve in attachment of this geckos with the wall. So the next one is about the iguanas. Iguanas जो हैं वो अगर देखें तो वो भी इसी सबऑर्डर Sauria से बिलोंग करते हैं. रोबस्ट बॉडी है, शॉर्ट नेक होती है, और डिस्टिंक्टिव हेड होता है. खासतौर पे मेरीन इग्वानास ऑफ गैलापेगस आइलैंड जो है, और फ्लाइंग ड्रैगन जो ड्रैको कहलाते हैं ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, वो इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं. नेक्स्ट वन इज अबाउट द फ्लाइंग ड्रैगन. व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लाइंग ड्रैगन्स? फ्लाइंग ड्रैगन्स जो है वो उड़ने वाली छिपलियां कहलाती हैं, और इसको ड्रैको बोलते हैं. और ड्रैको जो है उनकी बॉडी में लेटरल जो साइड होती है, उस लेटरल साइड से आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो है इसके ये विंग लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप ऑफ टिश्यूज हैं, वो एक्सपेंड करते हैं और ये से ग्लाइडिंग प्रोवाइड करते हैं. दे कैन नॉट फ्लाई, सो only they involved in the process of gliding. So gliding is occur due to the presence of the lateral folds of skin supported by the ribs. It is just like and the specialized ribs present that run throughout their lateral skin folds, and just like the ribs present on the umbrella, जैसे अम्ब्रेला होती है उसकी उसी की तरह इसमें भी प्रेजेंट होता है. ग्लाइडिंग इन ड्रैको 30 मीटर तक जो है वो ग्लाइड कर सकते हैं एक ट्री से. जब वो मतलब लॉन्च किए जाते हैं, जब वो गिरते हैं या मूव करने लगते हैं, तो वो 30 मीटर तक जो है दूर दराज तक जो है वो ग्लाइड करते हैं सिंगल
जो है वो ग्लाइडिंग के दौरान। कैमलियन इज अनदर काइंड ऑफ सब मेंबर ऑफ सबऑर्डर सोरिया। कैमलियन जिसे गिरगिट बोलते हैं, कलर चेंज करती है, दिस इज द कैमलियन। And the eyes in chameleon is very prominent structure because they can rotate their eyes in each direction 180 degree. So they are present in Africa, in India, and mostly arboreal, that mean live on the surface of the trees. Long sticky tongue that is used to capture the prey or different kind of insects. The next one is the Anolis. This is the Anolis, and you can see here is the Anolis, like just like the wall leather, but something is different, like the curl pattern, chromatophores, pigments. So Anolis or the pet store chameleon is also an iguanid, but it is not a true chameleon. Chameleon and Anolis are well known for their ability to change the color in response to illumination, temperature change होने से, light change होने से, light pattern और behavioral state change करने से जो है वो अपना color change करते हैं, इसी वजह से जाने जाते हैं. Last पे जी Gila Monster. Gila Monster, some kind of venomous lizards, or you can say that there are the two different venomous lizards that you can see here. This is the Mexican beaded. The beads are present on their skin, and this one is known as the Gila Monster, or you can say that Helo-derma suspectum, and this is known as the Helo-derma huridium. So both of these are venomous, and these heavy-bodied lizards are native to southwestern North America, Junub, Maghrib और शमाली अमेरिका में ये एग्जिस्ट करती हैं, और ख़ास तौर पे इनके वेनम जो होता है वो इनके तीत से किसी भी प्रे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, बिकॉज तीत जो है उनके अंदर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं. सो दीज ग्रूव्स आर कनेक्टेड with the venomous glands, and when the venomous glands contract, the venom enter into the grooves of the teeth, and then this one is injected into the body of the prey. So note अगर देख लें तो lizard bites are seldom fatal to humans. मोस्टली जो होती हैं वो लिजर्ड जो है वो इंसान की जिंदगी के लिए खतरनाक नहीं होती. सो दिस वन इज टोटली अबाउट द थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्स that we discussed here. The first one is the order Testudinea or Chilonia. The second one is called as the order Rhynchocephalia, and the third one is the order Squamata. And whose one group that is suborder of this group is discussed, that is known as the suborder Sauria. So we will discuss the next topics as soon as possible. And thank you very much to watch this video. Allah Hafiz.